Hello and welcome to India Today. This is Anita Brito in conversation with the fabulous team of आप जैसा कोई. Hi, hello. ये आप जैसा कोई बोल के इतना बहुत ही प्यारा sound करता है and you all are our favorite always, always. So firstly, a huge congratulations. The trailer has done amazingly well. Lots and lots of positive comments and you वहाँ पर आप लोग ने बहुत सारों का दिल जीत लिया है. बट एक कंप्लेंट सबसे है ऑडियंस से कि ये थिएटर में क्यों नहीं रिलीज हो रही. तो आप कि कौन जवाब देगा इसका, ये बताइए. Because it's a Netflix film, it's a Netflix original. So आप Netflix पे देखिए. It was always. It was always a Netflix film. It was always a Netflix film. The concept came from Netflix to Dharmatic, and from there we started developing it. So film की शुरुआत से ही it always meant to go on Netflix. Vivek, was there a specific moment or a real life inspiration that sparked the idea of आप जैसा कोई? So the idea came to Radhika, जिन्होंने कहानी लिखी है. So and then it came to me. So it was a 5-6 pager, a 10 pager or 5 pager document which she had written, and I found it very fascinating and interesting. Plot के अलावा उसमें और बहुत possibilities थी to explore, such as companionship, loneliness and romances today in age, and in terms of how family also gets involved, और जो हमारी societal conditioning है, patriarchy है, ये सारे पहलू थे which I felt can be explored in a beautiful way. So yeah, that's what fascinated me. The trailer has won many hearts, like I said. But Maddie, the most comments that we have seen is you are reminding people of Tanu Ved's Manu ka Manu. How do you see that, Mike? I think it's the love of the audience, because I haven't really done too many romantic films in my life. I think there's Rehna Hai Tere Dil Mein, a bit of a scene in Rang De Basanti, and Tanu Ved's Manu. But the romantic hero image is a little overwhelming for them. I think so when they see me clean shaven, it's a proper immediately relate to the Manu Sharma. But I think the characters are very different, and the beauty of this story is that it's seeped into very current day situations. They say the biggest, we have not revealed a lot of things in the trailer because the biggest twists and turns are in the movie. So it looks like a simple love story between two people who have an age difference. But that's not the only part of the story. I think there's a very limited part of the entire story. And what we've explored with the script and how Vivek has directed it is that how do people in today's world living in a crowd who are actually cursed with loneliness handle that bit, and how pacing has become almost everything today, and where small towns and smaller villages, they seem to have got something right that we in the cities haven't. So this is exploring that sort of a relationship, and that's why I was very excited about it. But having played romantic heroes, has it ever altered the way your own idea of love? Oh yes. In fact, if people say love is eternal and saat janmon ka hai, they don't tell you that it keeps changing over a period of time. It even the way you feel love, the way you show love, the way you acknowledge love is changing every so often. And like we were discussing yesterday, sometimes you can be with your loved ones like in a tight hug and still say, I'm missing you so much. Even though they are with you, you say you're missing them so much because you don't seem to have enough of time of them. And so these are small things that people fail to mention when they say eternal love. वो उसको बदलना ही पड़ता है और बदलते ही रहेगा. That's nice. But Fatima, pretending to be to love on screen, is it easier or harder, especially when you're single in life? Thanks याद दिलाने के लिए. I am in your boat only. विवेक ने ना कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखी गई है. तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से और काफ़ी लेयर्ड तरीके से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है राइटिंग में ऑन पेपर. तो उससे काफ़ी सारे जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी पार हम कर लेते हैं. एंड ऑल्सो सेट का माहौल ऐसा था, उन्होंने वैसा बनाया था कि देयर वाज एवरीथिंग राइट फॉर यू टू थ्राइव एज एन एक्टर. तो आप सबसे ज़्यादा अपने पोटेंशियल को टच करते हो जब भी आप एक ऐसे सेट पे होते हो जहाँ पे हर चीज़ आपके लिए बनी हुई है, ख्याल रखा गया है. तो वो एक परफेक्ट था. दूसरा, आई रियली गेट अलॉन्ग विथ हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम एज एन एक्टर एंड ऑल्सो मोर देन दैट एज अ पर्सन.
I am very, very fond of him. I think, very fond of him. I think he's sensitive, बहुत ही sensitive है, बहुत ही considerate है, और बहुत ही excited है, like a child. तो उसकी वजह से हमारा काम भी और वो scenes भी काफ़ी organically और chemistry भी बहुत innocent है. मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि दो passion है, but वो बहुत ही pure passion है. And it's coming from even in the writing direction and in our performance, it's coming from a space of honesty. तो सिंगल हूँ ना, वो यहाँ पे मेरा मन दिल भर जाता पूरा हाँ, भड़ास निकल दिल भर जाता है. You know, the other day I was talking to Sonakshi and she mentioned in my interview that doing romantic scenes is the most difficult thing for her on screen. So I want to understand from both of you all. Do you all also feel action easy है, comedy easy है, romantic scene करना difficult है? कुछ easy नहीं है, पता है. अगर आप कोई भी चीज़ ऑनेस्टली नहीं फील कर रहे हो, चाहे वो एक्शन हो, गुस्सा हो, प्यार हो, तो वो नहीं आएगी. यू हैव टू बिलीव इट एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट. द मोमेंट यू फेक इट, ऑडियंस इज गोइंग टू सी इट, बिकॉज वो इतना इंटीमेट रिलेशनशिप होता है कैमरा और आपका. ऐसा नहीं है कि आप स्टेज पे और लोग दूर है, तो यू नो इट्स मोर परफॉर्मेटिव, और उसमें भी अलग टैलेंट की ज़रूरत है. इट्स नॉट ईजी टू डू थिएटर, बट हियर लाइक एवरी एक्सप्रेशन ऑफ योर्स इट, एंड इफ यू आर अ वेरी वल्नरेबल पर्सन, लाइक मेरे अंदर जो है वो आपको दिख जाएगा. तो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एनी इमोशन. या all the emotions are difficult, but romance में like she was saying correctly, वो ज़्यादा close-ups पे काम करता है. और ना the camera is so perceptive ना कि it is able to get what you're thinking at that time even more clearly than what you're expressing. और इसमें बहुत फ़र्क है जो मैं कह रहा हूँ. If you're not genuinely in love, if you don't have a chemistry, if I don't have respect for her, and in the shot if I'm thinking कि मेरे बाल ढंग से हैं कि नहीं, no matter how experienced an actor I am, और मुझे सेट पे मतलब पता चला कि गंदा सेट है, डायरेक्टर के साथ लड़ाई हो चुकी है, ये सब चीज़ें ना आप एक्शन में कर लोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आप ड्रामेटिक्स में कर लोगे, लाउड में, पर वो लव जो आपको चाहिए ऑन स्क्रीन फॉर रोमांस ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है कन्विंस करने के लिए. यू लिटरली हैव टू बी इन लव विथ एवरीथिंग अराउंड ऑन दैट सेट फॉर यू टू फील एट ईज कि भैया ये कैमरा एंगल फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, मेरे को सही टाइम पे क्यों आ रहा है नहीं आ रहा है. इट्स जस्ट दैट इमोशन जस्ट फ्लोज. और जब तक वो नहीं होता ना, दुनिया इतना सिनिकल हो गया है कि दे वोंट फील योर लव, दे वोंट फील योर लव. सो वो eternally like completely surrendering to the scene is very important when you're doing romance. But then how do you do that? How do you break that ice between each other when you have to do romantic scenes especially? No, I have to fall in love. I have to. As soon as the camera is on, she's the most important person in the life for me, and I really have to feel what the character is feeling. And or else it just won't translate. It really won't translate. You will see some. Again, I give you an example. Yes, it's a little bit of a controversy, but if you see husband and wife stars, they're never able to create the chemistry on screen. Not one. Yeah. When you start dating each other, or when you're in love with each other, or you're in, you're already married, most of their chemistry doesn't work on screen. When they're separated or they're broken up, there are chances that might even work. So the reason is that you really have to desire the person. Yeah. And you have to imagine that you're in really love with a person, or else you want that person for who they are on or everything. वो नहीं होता ना, it becomes a very false emotion and it becomes technical, it becomes pixelated. तो ये रोमांस के लिए इसने ड्रीमी आइज कर दिया, लेफ्ट में लुक कर दिया, एंगल लाइट कर दिया, दिखता नहीं है वो रोमांस, फील नहीं होता है. But have either of you all ever said no to a romantic scene because you didn't feel it authentic? I have said no to romantic movies. Okay. Once you say yes to a movie, then it's very it's very small of you to say no to a scene. You might feel uncomfortable in some. I have, because I'm not able to see the sense in that. But then you always go with what the director has in mind. But I've never said no to a scene. I've said no to movies. Fatima, you want to add something? नहीं, मैंने यूजुअली स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट बिकॉज यू बिलीव इन इट टू सम एक्सटेंट. यस, लाइक ही सेड कि कभी एक सीन आप कन्विंस्ड नहीं हो तो, बट एक्टर्स है ना, वो तो करना ही पड़ेगा, वही हमारा जॉब है. सो यू इवन बिलीव दैट एंड यू बाय इट एंड यू टेल योरसेल्फ कि नहीं, दिस इज जो भी है, ये डायरेक्टर का विजन है और ये अब तुम्हारा विजन है और ये तुम्हारा इमोशन है, तो वो तो करना ही पड़ता है. But do you think now finally Bollywood is moving away from
unrealistic age pairing on screen? अनरियलिस्टिक नहीं, एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक है, Of course, क्योंकि this- सिनेमा रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो जो हम मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं वो सोसाइटी में इस वक्त ये कॉन्वर्जेशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। तो सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट और वेयर द सोसाइटी इज। आई थिंक दैट्स व्हाट। I think your question is कि are they more age appropriate romances right Yeah, now? हाँ, right they now. are, क्योंकि वो इतने उन्होंने मतलब लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया है कि now all the heroes are thinking कि वो ज़माना गया कि you can be much older and pretend to be the same age as the heroine and romance them. That's not. that's the problem. That has stopped now. That has completely stopped, I think, and also not being accepted. So if you have to be smart with how you show age-appropriate romance. But is it a good change for the entire industry? Whatever works. If your people are, coming out up in arms with what you're doing, then obviously that's not working. Our job is to tell them a story in the manner they want to hear it. ना, मैं अपना ही धुन में गाता रहूँगा और कोई सुनने के लिए नहीं है तो अकेले ही देखो. But has the idea of love changed over the years now, especially in 2025, when women like me, especially, I am very against commitment right now for a lot of reasons. Okay, do you think it's very? Why is it But that's coming from your past experience. possibly? अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस या अगर आप कभी प्यार में पड़े नहीं होते तो यू वुड हैव क्रेव्ड, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू बी लोनली, नोबडी लाइक्स टू बी अलोन। एंड शायद आपको हम सब वैसे रिश्ते में रहे होंगे जहाँ पे आप किसी के साथ हो बट आप फिर भी अकेला फील करते हो और तभी वो फेल्ड रिलेशनशिप होता है। सो आई डोंट थिंक लव हैज़ चेंज, लव इज स्टिल दैट स्पेशल। और हमारी फिल्म में भी हम उसी चीज़ को टैकल कर रहे हैं, हम उसी चीज़ से वही चीज़ों में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोनलीनेस, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, बराबरी वाला प्यार, तो जो हम रियल लाइफ में भी इन सब थॉट से हम बोल देते हैं कि आई डोंट वांट कमिटमेंट, बट डीप इनसाइड when you want a partner, you want to surrender. Like I would love to surrender because that is how love is supposed to be. But like yesterday you said no कि यार कोई है नहीं ढंग का. But ये सच है. हाँ वही मैं उसके हिसाब से मैं बोल रही थी because that is why we none of us are हमारे ready to. आसपास नहीं है. हम जैसे he was saying कि हम लोग जाते ही नहीं कहीं बाहर. वो भी है. हम कहाँ मिलते हैं लोगों से, हम घर पे है, टीवी भी घर पे देखते हैं, कंटेंट भी घर पे अकेले कंज्यूम करते हैं। जो कम्युनिटी व्यूइंग है, ज़्यादा लोग थिएटर्स भी नहीं जा रहे, तो वो कम्युनिटी एक्सपीरियंस ही कम हो गया है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड, आई थिंक पीपल आर क्रेविंग, क्योंकि अभी हम लोग पिकल खेल रहे हैं, हम पैडल खेल रहे हैं, हम वापस लोगों से मिल, इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग पैडल एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव मेड न्यू फ्रेंड्स। सो नाउ मे बी व्हेन यू मीट न्यू पीपल देयर इज अ Possibility. या Maddie? How much effort are you actually making to find that person that is important for you? आप अपनी दुनकी में अपनी एरिया में गुड़गुड़े खा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ सो मैं तो हमेशा कहता हूँ एक्टरों के लिए भी और किसी भी इंसान के लिए कि ट्रैवल करो, दुनिया भर घूमो, आपको दुनिया से ज़्यादा अपने आप के बारे में समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि आपका टॉलरेंस लिमिट क्या है, क्योंकि आइडियल लवर हस्बैंड या वाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। आजकल क्या हो गया कि हम रोमांस को समझौता बना के रखे हुए हैं कि ये मेरा दायरा है, ये तुम्हारा दायरा है, भैया तुम इसके अंदर आओगे तो मेरा लवर होगे वरना नहीं होगे। लव का चक्कर ये है कि ये सब अब डिफाइन कर ही नहीं सकते। आप वो लव इतना एम्पावर कर देगा कि आप अपने आप को अगर चेंज करना चाहें इस इंसान के लिए तो आपको आप में वो शक्ति आ जाती है। सो द मीनिंग ऑफ लव in metros is very different from what it is in smaller towns, and it's very different from what it is in villages. So you'll have to decide what works for you, and I think when you do that, like we're showing in this film, very effectively shown in this film, कि the guy I'm playing is a very quiet guy. वो अभी भी अपने किताबों में फूल रखता है, तो he's one of the guy who's stretching time. For him, it's not a quick hurry. He doesn't mind traveling 4 hours to go from Jamshedpur to Kolkata to meet a girl. And so that slowing down is, I think, what is appealing to the people right now. What, for both of you, what's your take on the jealous lover, toxic kind of guy that is shown in the film? For all three of you, this is. What's my take on it? I Yeah. guess, I mean, सिर्फ अगर character की बात करें ना, so I guess, I mean, like the character comes out of the story, if and again that is also a reflection of someone out there in the society, which we do see, so for me if it's serving the story in terms of
telling the story in its true essence, and then it's totally up to the makers, you know, like, I mean, everyone has their own right to say the stories they want to kind of share out there. So I don't have any specific lens ki nahi, this should be told and this shouldn't be. I mean, I'm nobody to kind of judge over there. Yeah, that's what my take would be. Maddie? The question was that what do you talk about these toxic? What are your take on these toxic? Toxic lover, See, jealous kind of in cinema, yeah. on screen. See, the thing is, people that age who are 42, 43, and they are drawn up in a different environment. So even though they don't mean to be offensive, even they don't mean to be, they want to be inclusive and they want to show respect. The way they have been taught to show respect to women is very different because they've learned it from their own parents. People like me have to learn the new age way of showing respect to women. Okay, for example, I'm used to opening doors in a car for a woman. I'm used to letting them pass before me. I'm used to, you know, standing up when a lady is standing. That is now become offensive. So there are people who say, please don't open the door for me. Really? Yeah. But it's Okay. a very small section. No, but there is a section. What I'm trying to say is it does confuse the man. So I have been it. Like, I'm like, please don't call me ma'am. Or please don't open the door for me. I can open my own doors. I've heard that. Okay. So the man is now tiptoeing between करना है नहीं करना है, इनकी पसंदीदा इनके कैसे पसंद है. So although they don't want to be offensive and they want to be courteous and well mannered, chivalry has now become redefined. True. So you have to what I'm trying to say is वो toxic बंदा हो सकता है कि he doesn't intend to be it, and that's what we're saying in this story. He doesn't, उसको लग रहा है कि I'm changing, but he's not changing enough. Yeah. He's still being offensive. He doesn't know that it is still hurting the woman. What he's thinking is a magnanimous gesture is still offensive. और उसको समझ में नहीं आ रहा है. It's only when things unfold in his own life that he realizes, oh my God. So I'm just saying, give a little bit of leeway to those guys. Explain it to them. Despite which, if their conditioning doesn't allow them to be, then you should know they're toxic. Fatima? मुझे लगता है कि सिनेमा थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि हम सब लोग काफ़ी वोकल हो गए कि ये अभी ओके नहीं है, क्योंकि अगर टॉक्सिक कैरेक्टर मतलब वन आउट फिल्म्स कम एंड इट वर्क्स ऑल्सो बिकॉज पीपल रेजोनेट विद इट. बट मेरे हिसाब से अगर हम ऐसी कोई फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर है उस दुनिया में, अगर आप बता दो कि ये सही नहीं है, ताकि जो इंसान जो लड़का एक गांव में वो बोल रहा है कि हाँ मैं भी एसिड फेंक दूंगा या मैं उसको उसने मेरे को मेरा हाँ नहीं किया तो मैं उसको पकड़ के साइड में लेके जाके उसको थप्पड़ मारूंगा और बोलूँगा कि नहीं तू मेरे साथ क्यों नहीं है, फिर वो समझेगी. तो वो उसके जहन में आ जाता है कि थप्पड़ मारने से लड़की मान जाएगी, वो तो खाली नखरे कर रही है. नो डजंट मीन नो. एंड दैट इज चेंजिंग इन द फिल्म्स ऑल्सो बिकॉज सोसाइटी इज ऑल्सो वांटिंग दैट चेंज. बट सो आई थिंक इट्स द मेकर्स वॉइस. ठीक है, ये भी बनेगा वो भी बनेगा. लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग अपने आप को देखते हैं कैरेक्टर्स में, हम लव स्टोरीज में भी खुद को देखते हैं. एंड यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं दो तरीका होता है, या तो आप बोलो आप गलत हो आप गलत हो आप गलत हो, पर उससे मैं तो डिफेंसिव हो जाऊंगी ना, मैं बोलूँगी हाँ मैं गलत हूँ लेकिन तू भी गलत है. द पॉइंट इज नॉट दैट. हियर द पॉइंट इज के येस यू हैव अ कंडीशनिंग. Yes, there is something happening, but let me tell you why it's wrong. Just sit down and I'll make you explain. कुछ लोग होते हैं ढीठ जिनको 10 मारो फिर भी नहीं समझेंगे, but there are a lot of people who are confused. उनको पता नहीं है, तो प्यार से ना हर चीज़ इंसान सीख जाता है. But also it's conditioning and it's a deep rooted conditioning. And it will take time. It will take time. Everything takes time. I'll just like to add something. Yes, to please. What she said. So basically, correct. Like what I meant in terms of characters can be anyone, be it toxic or whichever characters you're portraying. I guess it also depends on the lensing, how you're portraying them. Are you glorifying them? Because that is the impact it's going to have on the society. In terms of you glorifying in a way कि this is the right way. अगर किसी लड़की को का प्यार पाना है तो यही एक तरीका है. So कहानी किसी भी किरदार की हो सकती है जो समाज में है. I guess what matters is what lensing are you showing that story and the character is, and are you glorifying it, or what's impact it's going to have on the society, and just the responsibility of that. All right. Okay, this is going to be my final question, Fatima. One myth that you would like to burst about celebrity dating. सेलिब्रिटी डेटिंग Yeah. मतलब
पता नहीं यार No, you mentioned in my previous interview that you were on this Tinder and हाँ, on dating apps. कुछ So what नहीं is that यार, one? I don't know, like people get very awkward, they don't know what to say. You know, I tried dating somebody from dating me, I went on dates because I met random people who are not from the industry. It's a different world. You know, to understand the emotion or the complexities that a public figure goes through, you need a very secure and a very sorted man to understand that. You want to add something? No, लंबा चल रहा है भाई. All right. Well, on that note, thank you so much. It was lovely talking Thank to you so and much. Really looking forward to the Thank likewise, you. Anita. Lovely seeing you Thank again. you. See ya. Thank you. Take care.